Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with a full list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the genetically modified crops on livelihood of women's getting affected. So we could see that in the recent terms, okay, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इज वरीड ओवर द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द वीमेन फार्म लेबरर्स. तो ये जो वीमेन है, ये जो खेती में काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस जेनेटिकली ऑन दिस फील्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द मास्टर्स इन इंडिया. लेकिन आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न व्यक्त किया क्योंकि द प्लाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वीमेन एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन रूरल एरियाज traditionally engaged in de-weeding will be a part of the human cost if the government permits the commercial cultivation of herbicide-tolerant GM mastered in India. तो ये जितने भी मास्टर्ड ऑयल्स मास्टर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे कंट्री. Okay, so today the genetically engineering appraisal committee they approved the recently GM mastered for commercial cultivation, making it the first genetically modified food crop to receive such an approval. तो ये जो ZEAC के डिसीजन आए हैं, okay, which will make it a better yield and also lower cost for farmers and also the people who are environmentalists who have questioned these claims, adding that there are serious ecological and economical concerns which remains unaddressed till that. So the petitioners today have challenged the approval in the court, calling for a ban on the GM mastered cultivation because according to a report in business standards, the petitioners told the Supreme Court that this GM crops is unsustainable in Indian context and they could further raise issues of conflict of interest, arguing that the companies holding the patent for GM crops are the ones who are also testing its viability. So women have been recognized as the backbone of agricultural systems in our country and also the rural economy, and they are engaged in some of the most labor intensive farming practices, including sowing, winnowing, weeding, and harvesting. So they produce 60 to 80% of the food in India, and yet their significant contributions remains undervalued. So today, these people are fraught with difficulties and deprivations, and with land rights and access to resources, including finances. Accruing to male members of the family, there is a significant gender gap in agriculture that invisibles the role of women. So today in rural areas, women are experts in removing weeds and they are a part of the labor force in agriculture in India, which brings them employment. So therefore, यहाँ पे जो जस्टिस इस petitioners के बारे में सुन रहे थे, जस्टिस B.V. Nagaratna. So he said that women started agriculture, that humankind stopped being nomads and we saw the sprouting of civilizations. उन्होंने ये बात बोला. सो इसीलिए यहाँ पे अभी कंसर्न्स व्यक्त किया गया है कि यहाँ पे जब है जैसे ही आप लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेके आएंगे, वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, वीमेंस का जो रोल है इन एग्रीकल्चरल activities, it will slightly go down and this will lead to unemployability conditions and also it will affect the livelihood conditions of the people, basically the women's. Okay, तो ये यहाँ पे बोला गया, यही डिस्कस किया गया है अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ दिस वुमेन्स बेसिकली इन द रूरल एरियाज. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इंडिया यूएस एक्सरसाइज. तो क्या चल रहा है? युद्ध अभ्यास चल रहा है. ओके, सो वी नो दैट दिस एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज recently held in the area of Uttarakhand or in the state of Uttarakhand. So the area where it is being held is hardly about 100 kilometers from the line of actual control, basically with the line of China. So this exercise Yudh Abhyas is a military exercise between India and US, and is the main aim is to enhance understanding, cooperation, and interoperability between the armies of India and US with a number of complex drills being planned. So this exercise was started in 2004 until under the US Army Pacific Partnership Program, and this exercise is hosted alternately between both the countries. So since the beginning of May 2020, Chinese and Indian forces have faced open clashes with rock batons, clubs wrapped in barbed wire, and multiple locations along the LAC. And differing perceptions of border demarcations along the LAC is the reason behind.
So each country seeks the withdrawal of other forces and the return to the pre-standoff conditions, but neither China nor India agreed to such conditions. And therefore, this disengagement of the troops is still under process after several rounds of talks between India and China. Moreover, we have seen that since the standoff began, both sides have undertaken massive aggregation of infrastructures and building of habitats and support to house thousands of additional troops across the line of actual control. So today, if India has also needs to constantly stated that the relationship cannot back to normal as long as the situation along the LAC continues, and has repeatedly called for the restoration of the status quo along the LAC. तो यहाँ पे इसी के लिए जैसे ये युद्ध अभ्यास चल रहा है तो इसी के लिए यहाँ पे चाइना थोड़ा जो गुस्सा हो गया था, ठीक है। सो ये जब तक चलेगा चाइना थोड़ा भड़का ही रहेगा बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द रीजन, बेसिकली टू द रीजन ऑफ the LAC, which is basically 100 kilometers from the line of western, from the line of LAC, that is the line of the western sector. ठीक है, तो इसी के लिए ये न्यूज़ में था। ये जो युद्ध अभ्यास है ये थोड़ा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। तो वी नो दिस this bird, basically this great Indian bastard, it is one of the heaviest birds, flying birds, which is weighing up to around 15 kgs. ठीक है, so they inhabit dry grasslands and scrublands on the Indian subcontinent, and their conservation status is basically critically endangered. ठीक है, so आज इनका 150 से भी कम जो स्पेसीज है ये बचा हुआ है। सो देयरफॉर अंडर द CITES ऑल्सो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कुड सी दैट इट इज एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट इज फाउंड बेसिकली इन द रीजन ऑफ राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। राजस्थान जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, थोड़ा बहुत गुजरात में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी मिलता है। सो दिस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स आर टॉल बर्ड्स विद लॉन्ग लेग्स, देख सकते हो फोटो इनका, टॉल है बहुत, ओके। So the tallest individuals may stand up to around 1.2 meters in height, supposedly मान लो 4 फुट का होगा, ठीक है। So both the male and female are roughly the same size, with the largest individuals weighing around 15 kgs. So the males and feeders are distinguished by the color of their feathers, ठीक है। So इनका food habits क्या है? They are basically omnivores. So they prey on various arthropods, worms, small mammals and small reptiles. So आज इनका threats क्यों है? Because there is a reduced number of this species because they are dying by collision with infrastructures, particularly power lines and wind turbines. Also इन लोग का जो grasslands है ये आज deplete हो रहे हैं, hunting हो रहे हैं इनका, और जो development of mines and human habitation है in and around their habitats is also increasingly rising. तो आज यहाँ पे क्या हो रहा है? We have set up various number of conservation initiatives. Basically, this project Great Indian Bastard, which was launched by Rajasthan government with the objective of conserving the remaining population of the species. Okay, जो कि locally यहाँ पे बोला जाता है इसको क्या? गोडावन, GODAWN, गोदावन, ठीक है। सो टुडे इवन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आप लोग इनको बचाइए, किसके तरह? द प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का वाज अ वेरी ह्यूज सक्सेस। ओके, सो प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए जो हम लोग ने स्टेप्स लगाया था, तो इनको बचाने के लिए भी आप सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे निकाल के लाइए, ओके। तभी जाके हम लोग ये बहुत एक प्यारा सा एक बर्ड स्पेसिस को हम लोग बचा सकते हैं, ओके। सो दैट इज द थिंग दैट हैज बीन टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रशियन चाइनीज बॉम्बर्स फ्लाई ओवर पैसिफिक। तो यहाँ पे थोड़ा चाइना काउंटर कर रहे हैं क्योंकि यूएस का हेजिमोनी बढ़ता चला जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स अ रिप्लाई टू द युद्ध अभ्यास व्हिच इज गोइंग ऑन नियर द LAC बॉर्डर, ठीक है। सो आज हम लोग जानते हैं दैट इज बॉम्बर, बेसिकली दिस ये जो मिलिट्री बॉम्बर्स होते हैं ये कम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं डिजाइन टू अटैक ग्राउंड एज वेल एज नेवल टारगेट्स बाय ड्रॉपिंग एयर टू ग्राउंड वेपनरी, लॉन्चिंग टॉर्पेडोज और डिप्लॉइंग सम ऑफ द एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, ओके। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में यूज हुआ था, ठीक है। तो आज यहाँ पे रशिया और चाइना TU-95 बॉर्डर्स, ये रशिया का, और चाइनीज H-6 के बॉम्बर्स ये फ्लू किया है फ्रॉम द सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी ड्यूरिंग एन 8 आवर मिशन। तो आज सिंस मॉस्को और बेजिंग दोनों का यूएस के साथ बनता नहीं है, टेंशन है, इसीलिए थोड़ा बहुत ये पैसिफिक ओशन के पास आके अपना जो एक मिलिट्री ड्रिल है, डिफेंस कोऑपरेशन है बिटवीन मॉस्को एंड बेजिंग, यही चीज दिखा रहे थे, ओके। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट टुडे
Russia is directly supporting China, okay, amid tensions with US in the recent Taiwan visit of US House Speaker Nancy Pelosi. ओके तो इसी के वजह से यहाँ पे दो तीन जो एक एनॉय 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 क्रिएट करते रहते हैं चाइना, तो उसी का एक यहाँ पे एक शो कास्ट है, ओके, वेयर दिस bombers or this jets, okay, basically this air bombers, they flew over the Pacific. Basically they show that they are doing joint patrolling, but actually इसका मकसद कुछ और था, that is to annoy countries like US. ठीक है, so that's the thing over here. नेक्स्ट लिटल वेल हीट वेव्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि ओवर 160 to 200 million peoples could be exposed to lethal heat waves in waves annually by World Bank. तो यहाँ पे बोला गया कि 2030 आते आते इतने लोग हीट वेव से क्या होंगे, पीड़ित होंगे. And by 2037, the demand for cooling is likely to be 8 times more than the current levels. Okay, so यहाँ पे बोला गया है कि how we need to focus towards heat waves. तो heat waves होता क्या है? It's a periodical, abnormally high temperatures more than the normal maximum temperature that occurs during summer season in northwestern and south central parts of India. So it's a condition of air temperature which becomes fatal to the human body when exposed. Okay, so आज बोला गया है IMD के भी द्वारा कि the temperature should reach at least 40 degrees Celsius in plains and at least 30 degrees Celsius in hilly regions, okay, to have a classified heat wave. ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं इंडिया alongside बांग्लादेश, पाकिस्तान, they recorded the greatest losses to work hours due to heat exposure. Okay, so India has become 15% more vulnerable to extreme heat as compared to the 1990s level. So Indian citizens are most among the affected ones. Okay, more recently, most parts of Western Rajasthan, Maharashtra, other parts of Gujarat, Orissa have similar heat waves like conditions. तो आज यहाँ पे जितने भी हम लोग का इम्पैक्ट होता है इन रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, क्रॉप डैमेज होता है, लेस फूड प्रोडक्शन होता है, हाई प्राइस होता है, लेस प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, वाइल्ड फायर्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, तो आज हम लोग बहुत सारे एडॉप्टिव मेजर्स रहे हैं, सेंसिटिव अप्रोच के द्वारा बढ़ रहे हैं. ओके, वी आर ऑल्सो मेकिंग सम ऑफ द कूलिंग शेल्टर्स सच एज वाटर कियोस्क, staggered outdoor work hours, cool roofs for buildings. Also, we are changing our attitude towards passive cooling to reduce urban heat islands. Okay. Also, we are going in for action plans very much similar to cities like Ahmedabad. क्योंकि अहमदाबाद ने क्या शो किया है? The way to combat heat extremes by heat proofing buildings. Also, we need to replace the dark roofs. And once such number of long-term solutions can be replacing the dark roof surfaces with lighter and more reflective materials, it will result in comparatively cooler environment. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, तो वही रिपोर्ट का एक डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, so that's the thing associated over here. Okay, lastly we could see an Indian recipe to quell macronutrient nutrition. तो ये बेसिकली बोल रहे हैं about malnutrition. Okay, so writer बोल रहे हैं, ठीक है, so writer basically focuses, okay, about what is malnutrition. So it's basically a condition that develops when the body is deprived of vitamins, minerals, and other nutrients, and it needs to maintain healthy tissues and organ functions. So malnutrition occurs in people who are either undernourished or overnourished. So micronutrients are nutrients that are required by the body in lesser amounts. Okay, and they play a major role in metabolic activities of the body. So they includes vitamins as well as minerals. So what is the status of malnutrition today? तो फूड एंड फूड FAO जो कि फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, तो यहाँ पे फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ठीक है, दैट इज द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कि इंडिया रैंक्स अराउंड 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज, ओके, इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021. ठीक है, और यहाँ पे 15.3% क्या है, अंडर नॉरिश्ड है, and the highest population of stunted children around 30% and wasted around 17.3%. ठीक है, सो आज यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में भी हम लोग का क्या हाल है. We have got an average of around 21.8%. Okay, so today the steps, there are various number of steps that have been taken by various other countries also. Okay, developed countries हो गया, okay, वो लोग फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, they are solving the issue of malnutrition. So what is the food fortification? It is basically the adding nutrients to food, such as if I give the example of rice and wheat.
which are fortified with iron, folic acid, and vitamin B12. So salt fortified with iron becomes iodine. So today we are going ahead with various number of rice programs and anemia. So pilot projects on the distribution of fortified rice through the PDS system, okay, which resulted in preventing cases of anemia from around 58.9% to around 29.5%. So 2 साल के अंदर अंदर थ्रू द पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस हम लोग ने 58.9 से हम लोग सीधा 29.5% तक आ गए थे 2 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कीम्स. और यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज इंपैक्टेड है माल न्यूट्रिशन से, एनेमिक से. सो टुडे इफ वी नीड्स टू एनहांस दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे हम लोग को जितने भी हम लोग का मील स्कीम्स है, ओके, जितने भी हम लोग का आयरन डेफिशिएंसीज है अमंग द इवन द प्रेग्नेटिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सब को पीएम पोषण शक्ति निर्माण के थ्रू से हम लोग को इन लोग को एक सपोर्ट देना पड़ेगा, so that they could be solved or they could be not ridden with such number of malnutrition categories. So therefore, according to even Niti Aayog, okay, so our rice fortification budget of around 2800 rupees crore per year can save 35% of the total daily per year with no non-risks of toxicity. तो आज ये राइस फोर्टिफिकेशन जो है ये कॉस्ट करते हैं less than 1% of the food subsidy bill. Therefore, it has the potential to prevent 94 million anemic cases. So despite the program's proven efficacy, we could see that यहाँ पे फिर भी आज तक का जो एनेमिक या माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है. So therefore, if you wants to have a better terms and strategy, we need to follow these things religiously, and also we need to aware the individuals about the effects of malnutrition, and only then we could integrate more and more number of people towards the mainstream, which is irrespective of any diseases like malnutrition. तो वहां पे यही ऑथर डिस्कस किया गया है कि हाउ इंडिया नीड्स टू टैकल दिस माइक्रोन्यूट्रिशन malnutrition. ठीक है, so that's all for today. We have got this 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates and some of the free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.